If you're apprehensive over your rejected Subhadra Yojana application, then worry no more. Odisha Deputy Chief Minister Prabhati Parida on Thursday assured that the verification process of rejected applications would be completed within 15 days. The Deputy CM also announced that girls turning 21 years this month are also eligible for the mega scheme, and thus she requested everyone to apply without any further delay. Speaking to media, Prabhati Parida highlighted that Odisha government is committed to finding eligible beneficiaries who were rejected due to various reasons, and subsequently they will be added under the financial assistance scheme. एबे प्राय समस्ते फील्ड रे माने जो जगह रे कम रजिस्ट्रेशन हेची बेसी रिजेक्शन अच्छी से जगह को स्पेशल फोकस दूची विभाग एबे गोटे मालकानगिरी रो दुईटा ब्लॉक रो रिपोर्ट आसीथिला दुईटी पंचायत रो भी रिपोर्ट आसीथिला सेठी कालीठू टीम पहुंची चंते सीडीपीओ को दायित्व रे वेरिफिकेशन चली छे मु भाबुची आमे 15 दिन भितरे प्राय वेरिफिकेशन हेई जिवो जो माने योग्य हिताधिकारी से माने ए जो चतुर्थ पर्याय हबो सेथिरे आमे शामिल कर दो 1.6 लाख एप्लिकेशन अछि सेथिरे 2,67,000 भितरु 22% रो जा रिव्यू म नैथली 22% रो हे जाई छै बाकी आहुरी सब पड़ के अछि आउ जो माने नुआ जहाकू एई मासरे 21 हेला से भी नुआ अप्लाई करिवो से भी पाइबो। ब्यूरो रिपोर्ट OTV न्यूज।